There is often abundant fixed capillary staining, especially if examined 48 hours. The color does not blanch with pressure. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जबकि सुपरफिशियल में ब्लैंच कर जाता है. सेंसेशन इज रिड्यूस, खत्म नहीं होती, एंड द पेशेंट इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश शार्प फ्रॉम ब्लंट प्रेशर when examined with a needle. Deep dermal burns take 3 or 4 weeks to heal without surgery and usually lead to hypertrophic scar. ये इसके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है. फुल थिकनेस बर्न जो होते हैं, पूरी डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाती. दे हैव अ हार्ड लेदरी फील. Appearance can vary from that similar to the patient normal skin to charred black depending upon the intensity of the heat. There is no capillary return. Thrombosed vessels can be seen under the skin. These burns are completely anesthetized. A needle can be stuck deep into the dermis without any pain or bleeding. अब आता है फ्लूइड रेसिस्टेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड रेसिस्टेशन इज दैट द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम मस्ट बी मेंटेन्ड फॉलोइंग अ बॉन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड sufficient circulation to perfuse not only the essential visceral organs such as brain, kidney and gut, but also peripheral tissues, especially the damaged skin. ऐसा नहीं है कि इन्हीं को बचाना है, सबको बचाना है. Fluids for resuscitation in children with burns over 10% and adults with burn over 15% consider need for intravenous fluid. If oral fluids are to be used, salt must be added. Fluid need can be calculated from a standard formula. The key is to monitor urine output. ये देखते रहो urine output कैसा आ रहा है. Intravenous resuscitation is appropriate for any child with a burn greater than 10%. The figure of 15% is for adult. In some parts of the world, intravenous resuscitation is commenced only with burns that approach 30%. लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बड़ों में 15% और बच्चों में 10% याद रखना है. If oral resuscitation is to be continued, it is important that water is given not salt free. It has to be with salt. It is rarely possible to undergo sigmoid diuresis in the first 24 hours in view of the stress hormone that are present. इसलिए यूरिन आउटपुट देखते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में अगर यूरिन नहीं आए तो कोई आफत आ गई. हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन कैन बी फेटल. वही अगर आपने नमक दिया नहीं और पानी देते चले गए तो ऐसा हो सकता है. अच्छा जी, द रेसिस्टेशन वॉल्यूम इज रिलेटिवली कांस्टेंट इन प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ द बॉडी बर्न एंड देयरफॉर देयर आर formula that calculate the approximate volume of fluid needed for resuscitation of a patient of a given body weight with a given percentage of the body burn. These regimes follow the fluid loss which is at its maximum in the first 8 hours and slows such that by 24-36 the patient can be maintained on his or normal daily requirement. तो शुरू के 8 घंटे की आफत ज़्यादा होती है जिस समय सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है. There are 3 types of fluid use. The most common is Ringer lactate or Hartmann solution. Some centers use human albumin solution or fresh frozen plasma and some centers use hypertonic saline. लेकिन जो बेस्ट है वो Ringer lactate है. Perhaps the simple and the most widely used formula is the Parkland formula. This calculates the fluid to be replaced in the first 24 hours by following formula: total percentage of body surface area into weight into 4 is equal to 1.